यस, सो जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, इन केस ऑफ द सिंपल पेंडुलम देयर आर सम अजम्पशंस, लाइक द सिंपल पेंडुलम का जो बॉब होता है, जो बॉल होता है, वो बॉल का साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बराबर। तो अगर सपोज ये पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग है, और ये बॉब का साइज है, तो दिस इज ओके। वी कैन सी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज टू मच लार्ज as compared to the radius of this ball here. But in case if such a thing happens that the length of the string is very small like this and the bob is very large like this, so in that case we cannot use the formula developed for simple pendulum here, remember. Yes, okay. तो देखो यहाँ पे ठीक से जो बताया जा रहा था अभी कि अगर सपोज स्ट्रिंग बहुत छोटा है और उसके कंपैरिजन में जो पेंडुलम है, तो इस पेंडुलम का रेडियस अगर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इन दिस केस वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन दिस केस हियर। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखो, दिस इज वन ऑफ द अजम्पशन। बट यस, नो डाउट वी कैन कंसिडर द लेंथ इन दिस केस ऑल्सो। यहाँ पे भी अगर जब हमको एक्यूरेसी का सवाल होता है, एक्यूरेसी का जब सवाल आता है, तो उस केस में हमको क्या करना होता है, याद रखो ठीक से। अगर सपोज ये स्ट्रिंग है इतना लंबा, और थोड़ा ये जो पेंडुलम का जो साइज है वो उसके थोड़ा कम है, लेकिन इतना भी ज्यादा कम नहीं है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, we'll have to consider the center of mass, the distance of this center of mass from the point of support. That means this length of the string is, if is suppose L, and radius of this pendulum is suppose R, so we will have to add these two, L and R, so as to get the actual length of simple pendulum. Remember, we can consider this as a simple pendulum, but we will have to use this L plus R as the actual distance between the point of projection and the center of mass of the pendulum. Remember this correctly. तो ये एक बात है, चलो ठीक है। दूसरा assumption ये है कि the string should be inelastic. That means the string जो है, तो वो यहाँ पे इस मास की वजह से उसका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। ये तो कॉमन assumption है, बेसिक assumption है, बिल्कुल। और तीसरी बात ये है कि air resistance should be neglected here. तो there should not be any air resistance here. तो ये सारे जो assumptions है, तो वो satisfy होने के बाद उसको हम, उसका जो पीरियड है वो t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं जरूर, नो डाउट। लेकिन अभी इसमें देखो यहाँ पे होता क्या है ना, कि अगर सपोज हमारे पास एक प्रैक्टिकल पेंडुलम है, तो प्रैक्टिकल पेंडुलम, हाँ, और एक बात यहाँ पे ये है कि मास ऑफ द पेंडुलम शुड बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग शुड बी ऑफ वेरी वेरी स्मॉल मास और निग्लिजिबली स्मॉल मास एज कंपेयर टू द मास ऑफ पेंडुलम। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट assumption है, which is if it is not satisfied, then in that case it's called as the physical pendulum, or it is also called as the practical pendulum. And the period of oscillation of such a practical pendulum is not given by this formula, but it is to be obtained by using another method.
तो दूसरा मेथड यूज करके हमको प्रैक्टिकल पेंडुलम का फॉर्मूला, पीरियड का फॉर्मूला ऑब्टेन करना होता है. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव रॉड लाइक दिस whose mass is uniformly distributed along its length to be vibrating like this. तो अगर ये रॉड इस तरह से यहाँ पे क्लैंप किया हुआ है, होल में से उसको, उसके होल में से एक रॉड, एक सपोर्ट पास किया हुआ है, और इस रॉड को अगर थोड़ा हम स्ट्रेच करेंगे, उसके ओरिजिनल पोजीशन से अगर थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे यहाँ तक सपोज, और वहां से उसको छोड़ देंगे, ये ऐसा बन गया वो रॉड, और यहाँ से उसको हमने अगर छोड़ दिया तो इट विल जस्ट स्टार्ट ऑसिलेटिंग इन दिस वे. तो ये इस तरह से ऑसिलेट करना चालू करेगा, नो डाउट. बट व्हेन इट विल बी tilted at an angle थीटा, सपोज इसका जो है ये लाइन जो है वो थीटा इतना एंगल करता है, तो इस थीटा एंगल की वजह से क्या होगा कि उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर कुछ फोर्सेस काम करेंगे. ये सपोज सेंटर ऑफ मास है, तो कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर, तो देखेंगे ठीक से. तो एक होगा mg, दैट इज द वेट ऑफ दिस रॉड. तो पूरा वेट जो है उसका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा. वी कैन डिनोट इट बाय mg, बिल्कुल. एंड दिस mg विल बी एक्टिंग at a perpendicular at a distance L/2 from the center और rigid support. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसका भले लेंथ L है, लेकिन इफेक्टिव लेंथ कितना है, हम बोलेंगे L/2 है, क्योंकि इतने ही डिस्टेंस पे वो सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है जरूर. और इस mg को अगर हमने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, तो उसमें से एक कंपोनेंट जो है वो इस तरफ काम करेगा, जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड रहेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं mg इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल. और दूसरा जो कंपोनेंट उसका है वो इस तरफ काम कर रहा होगा, जो कि mg साइन थीटा से हम उसको डिनोट कर सकते हैं जरूर. सो दिस विल बी mg साइन थीटा, एंड दिस mg साइन थीटा कंपोनेंट will be producing a torque on this whole rod, which will try to rotate it in this clockwise direction. करेक्ट है. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाला जो टॉर्क है, तो वो टॉर्क यहाँ पे हमको मिलेगा इस तरह से. सो द टॉर्क विल बी इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. सो वी कैन कॉल इट एज mg sin theta multiplied by this L/2, that is the perpendicular distance here. So this will be obtained here, that is a torque. So this torque, this also can be simplified further so as to get it as mg L/2 into sin theta के बदले हम डायरेक्ट थीटा डाल सकते हैं, because this theta is going to be very small. So here we can say that this torque is going to be directly proportional to theta. And also we can say that this alpha, if we put this torque is equal to I alpha, तो torque के बदले अगर हमने यहाँ पे I into alpha अगर डाल दिया, तो हमको मिलेगा I alpha is equal to mg L/2 into theta. Yes, and then we can just get this alpha to be simplified to be equal to mg. और अभी जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये जो L है ये L/2 ही होना चाहिए, जरूरी नहीं, बट just we can just replace this L/2 by the distance of center of mass from the rigid support. Okay, तो ये L/2 हमेशा ही L/2 होगा ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं, इसलिए वो कभी कितना भी हो सकता है, L/4 भी हो सकता है, या कभी L/3 भी हो सकता है, या L/2 भी हो सकता है, या कभी कितना भी हो सकता है. It depends on where the center of mass is actually located. So that's why what we can say this L to be simplified as LC उसको बोलेंगे, या LCM भी बोल सकते हो. ठीक है, LCM का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, the distance of center of mass from the point of support. यहाँ से ये center of mass का जो distance है, that is going to be actually the effective length. ठीक है, effective length which is maybe L/2 or it may not be L/2, but whatever it may be will be denoted by L, or we can denote it by LC in general. So अगर इसको हम यहाँ पे LC बोल देते हैं, तो ये LC यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा, और थीटा तो है ही यहाँ पे ऑलरेडी, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे LC से. LC मतलब इफेक्टिव लेंथ. ओके, एंड हियर इफ वी टेक दिस I in the denominator in this other side, then we can get this simplified as mg LC upon I into theta. करेक्ट है, and this alpha is equal to something into theta. तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, अल्फा एक्चुअली क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता है.
ठीक है, जो एंगुलर एसएचएम का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जैसे हम कहा हमारे पास लीनियर एसएचएम के अंदर होता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, बराबर। तो सेम वैसे ही यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है तो वो एक्चुअली माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बदले थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम इक्वेट करेंगे, माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर, and that is because the directions of alpha and theta are just opposite. And now if we just equate this omega square with this mglc divided by I, then we can get simplified this as omega is equal to root of mglc upon I, correct hai? And hence this period of simple pendulum or practical pendulum here in this case can be obtained to be 2 pi by omega, where omega is going to be this whole thing here. If we replace it here, then we can get this 2 pi into root of this just reciprocal. तो इसका reciprocal बन जाएगा simply I upon mg into lc, correct है? So this will be actually the formula for finding the period of simple pendulum or practical pendulum, we can say. So practical pendulum has a period which is going to be t is equal to 2 pi root of I मतलब moment of inertia, याद रखो ठीक से, and this mg into L. तो m मतलब mass of that pendulum, g is the gravity, and L is going to be the effective length of the center of mass from the effective length of the simple pendulum. That means the length, the distance of the center of mass. Okay, so this is the distance of center of mass from the point of support. ये जो distance होता है इसको हम इसका बोलेंगे effective length. ओके, सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है उसको इफेक्टिव लेंथ बोला जाता है, एंड दिस विल बी एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और प्रैक्टिकल पेंडुलम, you can see. And here we can see clearly that this period of simple pendulum actually depends on the mass. Okay, but actually क्या है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है तो वो भी मास के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसकी वजह से यहाँ पे मास एक्चुअली इट्स गोइंग टू गेट कैंसल्ड. एंड नाउ इफ इट इज रियली अ रॉड, अब ये फॉर्मूला जो है वो हम इन जनरल किसी भी शेप के लिए यूज कर सकते हैं, नो डाउट. बट अगर वो एक रॉड है तो रॉड के लिए हमको पता है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड. अगर उसका लेंथ L है तो उस केस में फिर यहाँ पे हम इफेक्टिव लेंथ जो है वो उसका L/2 से रिप्लेस करेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसका होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे ml²/3 यूज कर सकते हैं, ml²/3, करेक्ट है? तो उसको यूज करके फिर हमको ये मिलेगा ओके. तो इससे हमको भी मिल रहा है कि t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ I के बदले क्या आने वाला है ml²/3, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड and perpendicular to its length, and mg into L. यहाँ पे L के बदले क्या आने वाला है L/2 आने वाला है, वो भूलो मत, ठीक है? क्योंकि L मतलब क्या है यहाँ पे LC, which is nothing but the effective length actually. So effective length of the rod is considered as L/2 only, and hence if we just simplify this, then mm gets cancelled, and if we just simplify this, तो यहाँ पे हमको मिलेगा L²/3 into इसका रेसिप्रोकल जो कि 2 by GL, right? So this is 2 by G into L, so that this L gets cancelled once, and what we are left with is 2 pi root 2L upon 3G. Okay, so this is actually going to be the formula for finding the period of oscillation of a rod, straight rod of length L here. Okay, so this is all about the period of oscillation. Yes, now we'll talk about the different SHMs. ठीक है, तो अलग अलग SHMs जो होते हैं तो वो अभी बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि तुमको पता होगा कि अगर सपोज एक यू शेप का ट्यूब है इस तरह से,
जिसके अंदर हमने मर्क्यूरी या कोई भी लिक्विड जो है वो भर के रखा है। Yes, suppose that this mercury is filled in this tube here. तो नॉर्मली हमको पता है कि वो दोनों तरफ सेम लेवल पे ऊपर आता है जरूर। सो दोनों तरफ जो उसका लेवल है वो सेम ही रहेगा बिल्कुल। बट अभी इस पे सोचो कि अगर हमने इसको थोड़ा एक तरफ से प्रेस किया, देखो यहाँ पे, इफ यू जस्ट प्रेस इट फ्रॉम दिस साइड हियर, तो यहाँ से अगर इसको हमने थोड़ा डिस्टर्ब किया, तो जैसे हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा कि दिस लेवल विल जस्ट गो डाउन एंड again it will come up and again it will go down and it will oscillate up and down like this. तो इसी तरह से वो ऑसिलेट करता रहेगा जरूर। तो ये जो ऑसिलेशंस है तो ये एसएचएम है, ये भी हमको प्रूव करना है और इनका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमको निकाल के दिखाना है। तो उसके लिए लेट अस अज्यूम दैट रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कंटेंट हियर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड सपोज दैट एच और इसका जो हाइट है तो ये ओरिजिनल हाइट इसका एल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एल इज द हाइट ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब एंड और यू ट्यूब, ये भी यहाँ पे एल ही होगा बिल्कुल। एंड सपोज दैट बाय चांस वी डिप्रेस दिस लेवल ऑफ मर्क्यूरी इनसाइड बाय अ डिस्टेंस x इन दिस केस हियर, ओके। तो x डिस्टेंस से अगर इसको हम डिप्रेस करते हैं अंदर की तरफ, तो ऑब्वियसली x डिस्टेंस से वो ऊपर भी तो जाएगा, ठीक है। ये फर्क सिर्फ इतना ही है कि जब ये यहाँ पे नीचे जाएगा तो इस तरफ ऊपर आएगा, और जब इस तरफ ऊपर जाएगा तो इस तरफ से नीचे जाएगा। तो इतना ही होगा सब जरूर। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से कि x इज द डिस्टेंस अप टू विच इट इज जस्ट डिप्रेस्ड, नो डाउट। अभी सोचो कि अगर यस सपोज ये मर्क्यूरी भरा हुआ है यहाँ पे, ओके, इधर तक, यस, ठीक है। तो अभी देखो जैसे हमने इसको ऊपर नीचे अगर डिस्टर्ब किया, ये इस लेवल से ऊपर x इतने डिस्टेंस से और यहाँ से नीचे x इतने डिस्टेंस तक उसको अगर हमने डिस्टर्ब किया, तो ऑब्वियसली इधर भी वो ऑसिलेट होगा जरूर, और जब वो यहाँ पे नीचे जाएगा तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, बट बाय द सेम डिस्टेंस दैट इज x वी कैन से। एंड जब यहाँ पे वो ऊपर जाएगा तो इस तरफ वो नीचे जाएगा by the same distance once again that is x here, ओके। तो अभी किसी भी एक पोजीशन पे अगर ये सपोज सबसे ऊपर चला जाता है, तो उस समय सिचुएशन ऐसा होगा कि यहाँ पे वो यहाँ पे रहेगा और इस तरफ यहाँ पे रहेगा, करेक्ट है। तो अगर हमने ये दो पॉइंट्स अगर जस्ट कंसिडर किए, ये दो पॉइंट्स दे आर एट द सेम लेवल एंड हेंस द एक्स्ट्रा प्रेशर, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा that will be the pressure created due to this column of height 2x here, करेक्ट है। तो इस 2x हाइट की वजह से कितना यहाँ पे प्रेशर एक्ट होगा, तो वो प्रेशर को हम बोल सकते हैं द प्रेशर, एडिशनल प्रेशर एक्टिंग एट दिस पॉइंट हियर विल बी h रो g, ये फॉर्मूला है उसमें। तो h के लिए बदले क्या आएगा यहाँ पे 2x इंटू रो इंटू g, ये बन गया प्रेशर। बट वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, राइट। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट point will be actually equal to this pressure multiplied by area, where A is the area of cross section of this whole tube, right? So we can get the force to be simply equal to 2x into rho g into A. So this is going to be the force actually. So we can get that the force is going to be equal to A rho g, sorry, 2A rho g into x, and this force is obviously will accompanied by the negative sign here. Just the reason is that the force is opposite to the displacement. When the displacement is upwards, the force will be downwards to stretch it
or to bring it back to the mean position. And when the displacement will be downwards, force will be upwards, so as to bring it back to the mean position once again. So this is the formula for the force, no doubt. But if you want to find out the acceleration, we'll have to find out the mass of that whole part which is moving here. So what is the mass of this whole part which is present in the test tube? तो पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना भी मर्क्यूरी भरा हुआ है उसका मास कितना है जो एक्सेलरेट हो रहा है. So we can say that the mass will be actually equal to volume into density, correct है. But volume we know that it is going to be actually equal to, अगर ये डिस्टेंस अगर हमने मान लिया L है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा L, that is because of the symmetry. So अगर ये दोनों डिस्टेंसेस L है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2L, that is the total height of the mercury column. So this total height and volume will be actually the volume of a cylinder is going to be pi r square into h, where pi r square can be written to be area A. तो A into h के बदले क्या आने वाला है 2 into L आने वाला है, and that is multiplied by rho, that is the density, will be the mass actually. So this is the mass and this is the force. So if we just divide these two, force and mass, then we can get the acceleration here. So acceleration in this case is actually going to be force divided by mass, so that the acceleration will become actually force, which is minus 2a rho g x, that is due to divided by mass, which is going to be actually 2a L into rho only. So that here 2a rho will get cancelled and we'll be left with acceleration simply to be equal to minus of g upon L into x, correct है. But we can also equate just this acceleration with the minus of omega square into x, right? And then we can just get this omega square to be simply equal to g by L. And since this omega square is equal to g by L, omega will actually be equal to root of g by L, and hence omega will actually be equal to omega to मिल गया. So period of oscillation of such an oscillations will be equal to 2 pi by omega, where omega can be put here and just reciprocal उसको तो अगर उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 pi root L by G, which is the same formula once again we have got it for simple pendulum, period of simple pendulum. But remember that what is L here? So L is nothing but the total length of this or total height of this mercury column. ओके तो ये पूरा जो मर्क्यूरी कॉलम का हाइट है तो वो यहाँ पे L रहने वाला है, and hence we can see this will be the correct formula. Yes, the next will be here, that is okay. और एक सिचुएशन है हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसा ही, जिसमें सपोज एक लिक्विड का कंटेनर है. दिस इज सपोज a container of liquid, and suppose there is a cylinder which is immersed in this liquid partly. तो उसका एक पार्ट जो है वो इस सिलेंडर लिक्विड के अंदर इमर्स किया हुआ है इस तरह से. ओके yes, and suppose that it is just depressed down slightly by a distance x further. तो अगर उसको हमने और ज्यादा डिस्टेंस से डिप्रेस किया तो ये देखो इस तरह से, ये हमने इसको x डिस्टेंस के साथ और ज्यादा डिप्रेस किया तो क्या होगा, उसके ऊपर एक बियॉन्ड फोर्स एक्ट होगा जरूर, एंड बिकॉज ऑफ दैट बियॉन्ड फोर्स इट विल जस्ट बी प्रेस्ड अप और पुश्ड अप, तो ये ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा. ठीक है, इसको हमने x इतने डिस्टेंस से नीचे प्रेस कर दिया या ऊपर प्रेस कर दिया, कैसे भी कुछ भी करो तो भी क्या होगा, देखो ठीक से कि अगर x इतने डिस्टेंस से इसको हमने अगर नीचे की तरफ प्रेस किया तो उसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा कि उसके ऊपर एक इस वॉल्यूम को वाटर ने रिप्लेस किया, बराबर. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस होल सिलेंडर ड्यू टू this depression of the cylinder through a distance x here will actually be equal to the volume of the weight of the liquid displaced. Okay, weight of liquid displaced by this cylinder due to the depression of it
थ्रू डिस्टेंस x। ठीक है, तो अभी इसमें वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड कैसे निकालेंगे? तो देखो, जब इसको हमने x इतने डिस्टेंस से डिप्रेस किया तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ? इस वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। और मान लेते हैं कि डेंसिटी जो लिक्विड का है वो मान लेते हैं रो डब्ल्यू, और जो डेंसिटी इस मटेरियल का है उसको मान लेते हैं रो। ठीक है, तो वेट ऑफ दिस लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल एक्चुअली बी इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब मास इनटू ग्रेविटी। बट यहाँ पे जो मास है तो वो उसको हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम को हम लिखते हैं, ये सपोज A is the area of cross section of this cylinder, तो वॉल्यूम आएगा A into X, करेक्ट है? A into X, this is going to be the volume which is replaced, and that is multiplied by density of liquid which is going to be rho W here, and that is multiplied with G, that is the force, beyond force acting on it when we depress it through a distance X below, right? चलो ठीक है, बट उसकी वजह से क्या होगा कि वो ऊपर नीचे x इतने डिस्टेंस के साथ ऑसिलेट करना चालू करेगा, बराबर? सो पीरियड ऑफ दोज ऑसिलेशंस कैन बी ऑब्टेन बाय जस्ट finding the force and then mass and then the acceleration, and finding the constant of proportionality between acceleration and displacement, just as we have just seen in the last derivation. तो अभी यहाँ पे mass of the block, whole block which is getting oscillated कितना है? देखो यहाँ पे, so mass of the oscillating block is going to be volume into density once again, but in this time we have to use the density of this material of the cylinder here, so it will be mass equal to volume. Volume कितना होगा यहाँ पे? area into the whole height, or we can call it as L here. तो अगर L उसको मान लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा L, that is the total length of this cylinder, and that is multiplied with density of the material of the cylinder, and this will be the mass. And now if we just try to find out the acceleration, then we'll have to divide this force by the mass, and hence we can get this force, that is going to be A x rho W into G, which is to be divided by A L into rho, so that this A gets cancelled and nothing else. So we can say that this acceleration will actually be equal to minus of, obviously minus sign will be justified because force is going to be in opposite direction to that of the displacement. अगर वो नीचे डिप्रेस किया तो फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा, और अगर ऊपर डिस्प्लेस हो जाता है तो फोर्स will be in the downward direction, and that's why we can get this acceleration to be simply equal to rho W upon rho into G into X, correct है? And that is upon also divided by L. So we can write it as rho W upon rho into G upon L into X. Yes. And then we can just talk about the constant of proportionality between acceleration and displacement, so as to compare it with this minus omega square into X, so that we can get the value of omega square easily to be simply equal to rho W upon rho into G by L. And once we get omega square, we can get omega also, that is square root of rho W upon rho into G by L. And then also we can just get the value of period of oscillation. So period of oscillation will actually be equal to 2 pi root the reciprocal of this omega, which is going to be rho by rho W into L by G, right? Yes. And if we want to express it in terms of the specific gravity, then also we can do that, because we know that the density of the material upon density of water is also called as the relative density or its specific gravity, and it is always denoted by sigma. So it will be sigma into L upon G. So see it here, this is going to be the formula for finding the period of oscillation of such a cylinder. अभी देखो, ये टेक्निक जो है वो टेक्निक तुमको अच्छी तरह से याद करके रखना है, ठीक से समझ के लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि तुमको सिलेंडर के बदले बॉक्स दे देते हैं. इफ देयर इज अ क्यूबिकल बॉक्स लाइक दिस which is immersed halfly into the water and part of it is above the water, then in that case you should be able to do all these things in the same way as we have done it here for the cylinder. तो सिलेंडर हो या बॉक्स हो या कोई भी दूसरा शेप भी अगर होगा तो भी तुमको ये पूरा सब करना आना चाहिए जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है. तो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर period of oscillations of a block which is floating on the water in this way.
or any liquid in general. Let us see another situation in which, suppose there is a gas contained in a cylinder like this, and suppose this cylinder is fitted with a piston here. ये suppose यहाँ पे एक piston जोड़ा हुआ है, ये piston है, ठीक है, और यहाँ पे गैस भरा हुआ है अंदर, and suppose that this piston is slightly pressed inside through a distance x. अगर इसको हमने x इतने डिस्टेंस से अगर अंदर प्रेस किया तो उसकी वजह से क्या होगा, this gas will exert some force on this piston in the outward direction, and because of that this piston will be just pushed forward. करेक्ट है? तो जैसे ये पिस्टन अंदर जाएगा, x डिस्टेंस से अगर अंदर जाएगा तो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है वो दूर धकेला जाएगा. लेकिन उसकी वजह से जब ये पिस्टन जो बिल्कुल बाहर आ जाएगा, बहुत ज्यादा बाहर आ जाएगा, इधर तक आ जाएगा, अभी वो कहां तक आएगा वो हम समझ सकते हैं कि इट विल जस्ट पुश फॉरवर्ड विद द सेम डिस्टेंस दैट इज x in the opposite side. Here this distance is also going to be x only, and hence if this piston just start vibrating between these two positions, then we can see the period of oscillation of this such a piston will depend upon the bulk modulus of the gas and pressure exerted by the gas. So see here what happens here is, तो जैसे ये x distance से अंदर चला जाएगा तो the force will be exerted on this piston in the outward direction, and that force will actually be given by the formula F is equal to dP, that is the additional pressure multiplied by A. But as we know that whenever some gas is compressed, what happens is it's depending upon its bulk modulus, it exerts some pressure in the opposite direction so as to bring it back to the same volume. तो उसका जो bulk modulus है, bulk modulus का फॉर्मूला क्या होता है जो हमको पता है ऑलरेडी कि V into dP by dV, करेक्ट है? इसको यूज करके हमको क्या मिलेगा, तो ये dV को इस तरफ लेके जाएंगे, V को भी इस तरफ नीचे लेके जाएंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ पे dP is equal to K into dV by V, करेक्ट है? And here dP मतलब additional pressure which will be exerted by this gas due to compression through the distance x here will actually be equal to, तो यहाँ पे K into यहाँ पे dV कैसे निकालेंगे, what is the change in volume? If you consider this area of cross section of the cylinder to be A, then we can say that A into x will actually be the change in volume, correct है? तो here it will be A into x, and that is to be divided by V, that is the volume, total volume of the cylinder here. तो ये पूरा वॉल्यूम जो है उसका वो भी कहलाएगा. So this becomes the additional pressure, and this additional pressure has to be put here in this formula so as to get the force. So force will actually be equal to dP into A, where dP is nothing but K into A into x upon V into A, so that it will become actually the force is going to be actually equal to K A square upon V into x, correct है? And obviously minus sign will always be there, just because this force is going to be in the right direction when we displace it towards left, and this force will actually be equal to will be directed towards left direction when we displace it towards right. Okay, so it will be opposite to the displacement, and that's why minus sign will always be there. And hence this force, from this force we can also find out its mass, acceleration. So first of all we'll have to find out the mass of this whole gas contained here. Mass is always equal to volume into density, correct है? So volume into density, तो इसलिए ये mass हो गया, और उसकी वजह से हमको ये मिलेगा the acceleration of this piston here will actually be equal to force divided by the mass. And since force is already obtained to be simply equal to K into A square upon V, and that is multiplied by x, should be divided by mass, where mass is going to be simply V into rho, so that we can get this acceleration to be simplified as minus of, so here it will be K A square upon V square into rho, and that is multiplied with x. So here this factor is going to be the constant of proportionality between acceleration and displacement,
which we can equate it with omega square, just because we have that acceleration is always equal to minus omega square into x, and hence we can just equate this omega square with k a square by v square into rho, and hence omega can be obtained to be simply equal to root of k by rho into a square by v square, where v is the volume, a is the area of cross section. Okay, so then we can just get this period of oscillation of such a gas or piston to be simply equal to 2 pi by omega, correct hai? Where omega can be replaced so that we get this 2 pi root the reciprocal of this whole thing, that is rho by k into a v square by a square, and this is actually going to be the formula for finding the period of oscillation in such a situation. Again, you have to remember the form technique actually, and not the final formula only. तो सिंपली आपको फाइनल फॉर्मूला ही सिर्फ याद नहीं रखना है, बल्कि आपको टेक्निक भी यूज करना है, लर्न करके रखना है. यस, बिकॉज समटाइम्स इन दिस केस द वॉल्यूम, ये जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का ये लेंथ दिया हुआ हो सकता है, तो अगर ये लेंथ उसका एल दिया हुआ है तो उस केस में हम उसका वॉल्यूम जो है तो उस वॉल्यूम को a इंटू एल ऐसा लिख सकते हैं आराम से, और उस केस में फिर v को अगर a इंटू एल लिख दिया तो क्या होगा, v अपॉन a जो है तो वो l बन जाएगा, और v अपॉन a के बदले अगर l डाल देंगे तो ये l स्क्वायर बन जाएगा, और ये l मतलब वो बाहर आ जाएगा फिर उसके इस केस में. तो इस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे इस तरह से. ओके, सो इन दिस वे वी कैन गेट दिस. सो इस तरह से हमने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर आज के क्या देखा कि अलग अलग जो ये होते हैं, जैसा कि सिचुएशंस होते हैं, तो उनके अंदर हमको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालना होता है, तो वो हमने देखा. कॉमनली सभी के बारे में एक ही बात करनी है हमको, एक तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव करना है. उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फोर्स निकालना है, उसके बाद मास निकालना है, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन जो कि फोर्स अपॉन मास हुआ करता है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हमको ये एक्सेलरेशन निकालना है. एंड वंस वी गेट एक्सेलरेशन, उसके अंदर x आना चाहिए, तो एक्सेलरेशन और x इनके बीच में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है उसको हमको ओमेगा स्क्वायर के साथ इक्वेट करना है, because already we have that acceleration is equal to minus omega square into x, and using this we can just get the relationship between them, and we can get this omega square immediately. And once we get omega square, we can get omega as and immediately we can get this time period also as well. So इस तरह से हमको किसी भी सिचुएशन के अंदर टाइम पीरियड जो है वो इसी तरह से निकालना है, याद रखो ठीक से. So this is all about this today's lecture, and now we will stop here. Okay. Yes. Listen.